गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के बारे में अपना चैप्टर शुरू है, तो अभी जस्ट रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद हम जो डिसीज है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज हेल्थ? कौन बताएगा? Health is a complete state of physical, mental, and social well-being. Health is an increased productivity and ensure longevity. Way to ensure good health. Balanced diet, personal hygiene, exercise, awareness about prevention and the control of the disease, proper waste disposal, and vaccination. Vaccination is the important factor. What is disease? Okay, it is a condition of disturbed and the deranged function of the body or system one or more organs. यानी क्या? एक कंडीशन है जिसमें डिस्टर्ब और डीअरेंज फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शन है वो जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसके वजह से? वन और मोर ऑर्गन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, डिफेक्टिव डाइट और हेरिडिटी से, तो हम उसे डिसीज बोलते हैं। डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, देयर आर 5 डिसीज कॉजिंग एजेंट्स: मैकेनिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। एंटीजन, what is antigen? Any Any foreign substance substance invading body and capable of stimulating an immune response. Good. Antigen, any foreign substance invading body and capable of this stimulating an immune response is called antigen. Antibodies, protective chemicals produced by the immune cells to respond to antigen. यानी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज किया जाता है, जो आता है उसे एंटीबॉडी कह सकते हैं। ओके, एंटी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी: game D. गेम टी। व्हाट इज डी? Delta. डेल्टा। जी फॉर गामा, ए फॉर Alpha. अल्फा, एम फॉर Micro. Micro. एंड ई फॉर Epsilon. एप्सिलॉन। इम्यूनोलॉजी, what is immunology? Immunology is the branch of Science which is the study of immune system. Immunity. What is immunity? The- Immunity, the ability of the body to fight the disease causing. Organisms. Okay. Types of immunity. There is Innate 2 types immunity. of innate immunity. Acquired Acquired immunity. Good. What is innate immunity? It's come from since birth. Birth. It is Okay. It is non It is specific or non-specific? Non-specific. Non-specific. Because it's come from since birth. birth. Okay. It is natural immunity because of this. This. It is inborn capacity of the body to resist pathogens. It does not depend upon the previous exposure to the foreign substance. Okay. Innate immunity has the barriers. There is 5 barriers. 5 barriers. First one is epithelial Epithelial cells. cells. Epithelial cells is Sebaceous. Skin. subcute. Subcute. Okay. The healthy skin has the high concentration of salt in drying sweat. ज़्यादा नमक खाने से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ज़्यादा नमक खाने से स्वेटिंग हो जाता है हेल्दी स्किन में। सेबेसियस सिक्रीशंस, व्हाट इज सेबेसियस सिक्रीशंस? व्हाट इज सेबेसियस? भूल गए सब कुछ, मैं नहीं बताऊंगा अभी। सेबेसियस सिक्रीशन हैव बैक्टीरियाइडल। व्हाट इज साइडल? To kill. To To kill. kill. बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फंगस को किल करने का जो प्रॉपर्टी है एपिथेलियल सेल सरफेस में आ जाता है। ओके, द म्यूकोसा ऑफ, ये सीरियली आप लिख सकते हो। Yes. म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज द सेवरल इनेट इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द म्यूकोसा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो एंटीजन को किल कर Kill सकता कर है। सकता है. ओके, द नोज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाउ कम? Because of Nose hairs. nose hairs. Good. The cuff reflexes is an important defense mechanism of respiratory tract. Respiratory tract में जो cuff reflex है उससे भी हम avoid कर सकते हैं उसको. Yes. The mouth which has the
inhibitory effect of the microorganism because of saliva. The acidity of gastric secretion in the stomach destroy the microorganism. एपिगैस्ट्रिक Epigastric region में जो एसिड रहेगा वो इनहिबिट कर सकता है. The acidity हो गया. The flushing action of the urine. यस Okay. और sperma and the zinc present the semen is the antibacterial. एंटीबैक्टीरियल कुछ याद आ रहा है ना? यस Second, antimicrobial substance in the blood and the tissue. The complete system is equal to 30 serum proteins. यस याद है? Okay. The complete cascade. What is cascade? Series of reactions. सीरीज ऑफ रिएक्शन Okay. Is activated after presence of the microbial pathogens to the eliminate pathogens. The interferons. What is interferons? इफ वन गेट्स अफेक्टेड द अदर गेट्स सिग्नल अबाउट दैट Class of the cytokines, soluble proteins released by the virally cell affected. Third one is cellular factors in the innate immunity. Phagocytic cell discovered by the ये CT के लिए important है. मैकेनिक ऑफ Mechnikov in 1882 are the group as the microphages and the macrophages. What is micro and what is macro? Micro जो छोटा वाला छोटा रहेगा वाला। उससे थोड़ा बड़ा जो रहेगा वो macro Macro रहेगा. They are removed foreign particle that enter in the body. Class of the lymphocytes called natural killer NK cells. An important non-specific defense against the viral infection and the tumor. What is fever? Natural. Natural defense. सबको पता है और फीवर के बारे में सबको आके गया है. यस It stimulates production of the interferons and help acute phase APP. See what is CRP? C-reactive protein. C- reactive protein Mannose binding protein, alpha 1 acid glycoprotein, serum amino protein. अभी APP में क्या हो सकता है जो प्रोटीन के बारे में? नंबर ऑफ जो प्रोटीन है काउंट बढ़ जाएगा. APP are the believed to enhance. ठीक है ये सब सीखा है. Second type acquired immunity. Adaptive और specific immunity. वो non specific है. That comes from since birth. ये adapt करना है. The resistance that an individual acquires during the life. बराबर है? यस Day to day life में हम acquire करेंगे उसको by vaccination and other sources. It requires several days for activation. वो since birth से जब जन्म होता है तब से आएगा ये. वैसे नहीं है हाँ. It has following unique features. Specificity. It is specific for each type invading pathogens. Diversity. It can recognize all variety of the. Pathogens. What is discrimination? differentiate between own cell and foreign cells Okay. yes What is memory? keeps the memory of the previous previous exposure of exposure infection. ठीक है ये टाइप तो पता है. yes Cells of immune system. What is lymphocyte? What is antigen present in cells? Lymphocytes. They like the other blood corpuscles. Arise from the side cells. The hematocytoblast present in the liver of the fetus and the bone marrow of the adult. आया समझ में? Yes. क्या? कि lymphocytes stem cells में रहते हैं called hemocytoblasts present in liver of the fetus. Fetus के liver में रहेगा और adult के bone marrow में रहेगा. रहेगा Some of them undergo the differentiation in the gut associated basal lymphocyte tissues, tonsil or Peyer's patches. What is Peyer's patches? stomach का वो तीन duodenum Duodenum, jejunum, ileum. Small Okay. intestine. yes Tonsil में. Gut associated basal lymphocytes tissues. Okay. They are called basal or B lymphocytes. Basal lymphocyte or B lymphocyte. Other are differentiated in the thymus gland and are the term as the T lymphocyte. What is thymus gland? Where it located? It is located. Opposite to heart. उस टाइम बताया था दिल चीर के देखो. Mechanism of action of T lymphocytes to the antigen. Antigen को T lymphocyte का ये action कैसे रहेगा उसका mechanism देखेंगे. The T lymphocytes produces 4
types of clone